अभी आप कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, दैट इज द एंड ऑफ द मैटर। आप अभी उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्या? आप टच नहीं करेंगे, घुसेंगे नहीं वहां पे। अदरवाइज 15,000 रुपये पर डे के हिसाब से रेंट देना शुरू कर दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि आप ग्वालियर में पता कर लीजिए क्या ऑर्डर हुआ था। भाई साहब, एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स में अर्जेंसी क्लॉज भी होता है। आप जबरदस्ती किसी की भी प्रॉपर्टी में घुस रहे हो। वॉट एवर इट मे बी, वेदर ही इज द ओनर और यू आर द ओनर, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। प्रपोजल कर दिया तो आराम से बैठिए, सोइए घर में। यू कांट टच। व्हाट इज द लेटेस्ट जजमेंट सर बाय द सुप्रीम कोर्ट? What is the latest judgment by the Supreme Court where 7 guidelines have been laid down? दीजिएगा। और व्हाट अबाउट आर्टिकल 300A? आप किसी की भी जमीन के ऊपर दादागिरी करेंगे क्या कि मैंने सोच लिया इसलिए मेरी हो गई? सॉरी सर। Immediately remove all your encroachment, otherwise pay rupees 15,000 per day by way of right. And I am giving you a 2 days time to remove all your encroachment. From third day, you will be liable to pay rent at the rate of rupees 15,000 per day. It is a constitutional right. I am least concerned about the extent of the property. Thank you, sir, for understanding me, sir. Whatever it is. Joining from the government land. Now they have constructed the roadway. आपकी जमीन इमीडिएटली रिमूव ऑल दी कंस्ट्रक्शन। 2 दिन में जवाब पेश करेंगे। तीसरे दिन से 15,000 रुपये पर डे की कॉस्ट आप रेंट देना शुरू कर दीजिए। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ अ पर्सन, राइट? एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली लेड डाउन 7 गाइडलाइंस। वी हैव गॉन थ्रू। आपको क्या लगा था? हमें नहीं मालूम था। दिया ना ओपन। मैंने क्यों 2 दिन का आपको समय दिया है? सुनिए सुनिए सुनिए, 2 दिन तक का मैंने क्यों मोहलत दी है रेंट से? ताकि आप हमको दूसरे दिन 22 तारीख को सेटिस्फाई कर दें कि आपका राइट है। अगर आपका राइट है तो 23 तारीख से आपको रेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं है तो फिर समझ लीजिए सर, मैंने जानबूझ के आपके भी इंटरेस्ट, आपने कहा था 2 दिन का जवाब मैंने दे दिया, तो रेंट दे दीजिए। रेंट दे दीजिए। क्या है, 3-4 दिन के लिए तो है। 40-45 हजार रुपये आपके लिए कौन से पड़े? अरे आपके लिए कौन से मायने रखते हैं सर? शासन को कहाँ मायने रखते हैं? और जनता की सहूलियत के लिए 45,000 रेंट नहीं दे सकती क्या? आप ही कह रहे हो ना जनता की सहूलियत के लिए। नहीं नहीं सर, परसों, क्योंकि 2 दिन की आपको मोहलत है 15,000 रुपये से, और परसों हमने ये देखना है कि आपको 15,000 की मोहलत और बढ़ानी है कि आपको तुरंत उठवा देना वहां से। मैंने कहा था ग्वालियर में पता कर लो क्या हुआ था जब 15,000 पर डे की रेंट की लगी थी। दूसरे दिन वहां पे बैरिकेड लगा के रोड ब्लॉक कर दी गई, और चौथे दिन पूरा खाली करके इनको पकड़ा दिया गया कि अपनी जमीन पकड़ लो। इसके बगैर नहीं सुनते सर। 131, हाँ हाँ हाँ, 13140/2024, इट इज submitted by Shri Mohan Sarkar that the authorities have already sent a proposal for acquisition of land belonging to the petitioner. Next, it is the case of the petitioner that the respondent number 7 is illegally constructing road over petitioner's land bearing Khasra number 266 at measuring 0.1900 hectare bracket में part of, and Khasra number 273 at measuring 0.56 hectare bracket में part of, situated at village Bharti, BARTI, Tehsil Rampur, Baghelan, district Satna. That is the specific case of the petitioner that the said construction is being raised without acquiring the land belonging to the petitioner. Even according to the State Council, the proposal has been sent for acquisition of the land on which the road is being constructed. The only dispute which is being raised by Shri Mohan Sarkar is that road was already in existence for the last 40 years, but now it is being widening, and now it is being repaired. Consider the submissions made by the Council of the State. Whether the state can,
without adjudicating the correctness of the statement made by the State Council that a road is in existence for the last 40 years. The only question which is required to be answered by the state is as to whether the state can claim adverse possession against against the residents of the state or not. Police stop. Furthermore, the right to hold property is a constitutional right as enshrined under Article 300-A of the Constitution of India. The Supreme Court in the case of Kolkata Municipal Corporation and another versus Bimal Kumar Shah and others decided on 16th of May 2024 in civil appeal number 6466/2024 has laid down 7 principles which reads as under paragraph 30 से लेके पूरा 30 तक ले जाइए, वो काफी लंबा चौड़ा है. Since the right to hold property is a constitutional right and the petitioner cannot be deprived of the fruits of his right unless and until he is legally dispossessed either by acquisition or by private negotiation. Accordingly, the respondents are directed full stop. At this stage, it is submitted by counsel for the state. He may be granted 2 days time to file return. In view of the aforementioned discussions, it is directed that the respondents shall immediately remove all their encroachments from the land in dispute within 2 days from today, failing which they will be liable to pay a daily rent at the rate of rupees 15,000 till the encroachment is removed. List this case on 22nd of May 2024 for further hearing. ऐसा 22 तक या तो रिटर्न फाइल करके सम हाँ. So there is a representative which is in the